उनको अगर चक्कर आए या फिर if they are not comfortable and if they faint मतलब बेहोश हो जाए, right? So what will you do in such conditions? See, this type of thing can happen anywhere. This type of thing can happen in your school. This type of thing can happen when you are playing in the playground, है ना? All these things can happen anywhere. So in such conditions, what will you do? Okay, what will you do in such conditions? We are going to understand. Okay, so if your friend suddenly suffers from nausea, तो आप क्या करोगे? हाँ, चलो, who will say me? Ahad, read the answer and say. Okay, ma'am. If my friend faints suddenly, suddenly I will make him drink syrup made by mixing lemon juice, water, and sugar. I will Yes. make I will make him rest and ma'am, I will make him rest at an airy ma'am, place. Airy what is place. written? Airy place. Airy place. Airy place. I will loosen his clothes, and when he becomes Con- conscious, conscious. will take him will take him to hospital. Yes. So what is mentioned in this? Beta, listen carefully. Okay, now I'm explaining. Everyone can listen me now. All of you can listen me now. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Uh, so if your friend suddenly suffers from nausea, nausea मतलब कि if he is not comfortable, अगर उनको चक्कर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, है ना? तो if my friend faints suddenly, what is it? If my friend faints suddenly, I will make him drink syrup made by mixing lemon juice. Made by mixing what, beta? Lemon juice. Lemon juice means what? Limbu Nimbu ka sharbat. juice. Yes, lemon juice means limbu. This Nimbu uh, sir. yes, yes. By mixing, because sugar and lemon is good, right? Uh, I will make him drink syrup made by mixing lemon juice, water, and sugar. Okay. I will make him rest at an airy place. Airy place मतलब कि where there is good air, जहाँ पे अच्छी हवा हो, है ना? If we are in a congested place, अगर हम बंद रूम में है ना, तो उनको airy place में ले जाएंगे. I will make him rest at an airy place. Then I will loosen his clothes. और क्या करेंगे हम? उसके clothes loose करेंगे, है ना? ताकि अगर his clothes are tight, then also he might be suffering this suffocation हो जाएगा उसको, right? So I will loosen his clothes, and when he becomes conscious, I will take him to hospital. Where you will take him, beta? To the hospital, right? ये See, ये हाँ बेटा, ये लिखना है. हाँ ये लिखना है. ये लिखना हाँ, है. yes बेटा, you have to note down. Yes, so I will take him to hospital. देखो, whenever there is an emergency in your surroundings, कभी कोई बच्चा फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए, कभी कोई किसी बच्चे को अच्छा ना लग रहा हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको डर नहीं जाना है. क्या करना है? यू डोंट हैव टू बी स्केर्ड. आपको क्या करना है तो फिर? आपको हमको डर नहीं जाना है। हाँ, डरना नहीं है. और आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको उनको नींबू जूस बना के पिलाना है. एंड आफ्टर दैट बेटा, इफ पॉसिबल, कॉल योर नियरेस्ट डॉक्टर इमीडिएटली, है ना? कॉल एन एम्बुलेंस, कॉल द नियरेस्ट डॉक्टर. Yes, or else what you have to do, beta, if you are in school, you have to inform your teacher, your principal. कभी कभी ऐसे चीज प्लेग्राउंड में भी हो जाती है, तो जहाँ पे टीचर और प्रिंसिपल नहीं होते हैं,
So you have to call your teacher or principal. And if you are playing in the playground, अगर आप आपकी सोसाइटी में या कहीं खेलने गए हो, if you are playing in a playground, तो इमीडिएटली आपको नियरेस्ट आपके बाजू बाजू में जो भी एल्डर दिखे, बड़े दिखे, उनको बुलाना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना. सो दिस वे यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हेल्प हिम, है ना. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग योर ड्यूटी. ओके. सो एज अ गुड बॉय and as a good girl, we have to follow these steps. Okay, what steps you will follow, Paryani Shafiq? If your friend faints, or if your friend is not feeling well, what you will do, beta? I will make and give him lemon juice. And then, Then I will call doctor. yes, immediately, without wasting time, right? Yes, ma'am. Then, Then Then I will call the ambulance. yes, in case if it is very and yes, don't give medicines by yourself. કે લે તું આ દવા લઈ લે, આ દવા સારી છે. Not like that way. Always give the medicines which are prescribed by the doctor. And not only give, always take the medicines also which are prescribed by doctors. Okay, don't take yourself any medicines. Okay, otherwise it will create a problem. Is it clear? Prescribed means what? What doctor has written. yes, Okay. ma'am. Yes. Then what you will do, Shafiq? Yes, ma'am. Ma'am, What, we will ma'am? take him to hospital. Yes, take him to the nearest hospital. Okay. Then पहले उससे पहले क्या करोगे? मैम लेमन जूस देगी. हाँ, फिर take him to an फिर airy place. डॉक्टर फिर डॉक्टर को कॉल फिर डॉक्टर करेंगे. को बुलाएंगे. हाँ, सबसे पहले देन एम्बुलेंस को बुलाएंगे. सबसे पहले अगर आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आपको एम्बुलेंस मतलब डॉक्टर को ही बुलाना है. बिकॉज आपको पता है कि एम्बुलेंस में थोड़ी थोड़ी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है. एम्बुलेंस में डॉक्टर होते ही है. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट यू टू कॉल द एम्बुलेंस. ओके. अगर आपके एम्बुलेंस आने में टाइम लग रही है, डॉक्टर को आने में टाइम लग रही है, उस टाइम में आप शुगर सिरप पिला सकते हो, उनको एक कंजेस्टेड रूम में से बाहर निकाल के एरी प्लेस में ले जा सकते हो, उनके कपड़े लूज कर सकते हो, अगर टाइट शर्ट पहना है, टाइट क्लोथ्स पहने हैं, है ना. तो ये सब चीजें आपको सबसे पहले करनी है. एंड देन टेक व्हेन ही कम बिकम्स कॉन्शियस, और उनको जब अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा, तो उनको हॉस्पिटल भी ले जाना है. अगर वो सीरियस नहीं है तो ओके. अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई आने तो दवा खाने ज ले जाओ ऊपर से, देन यू डोंट हैव टू वेट, बिकॉज एवरी सेकेंड मैटर्स, राइट. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स आपको हर जगह फॉलो करने हैं. चाहे वो स्कूल प्ले ग्राउंड हो, आपका क्लासरूम हो, है ना. स्कूल में और स्कूल प्ले ग्राउंड में आपको पहले आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म करना है, right. And then they will immediately call the doctors and do the necessary steps. Okay. अगर आप घर में हो, अगर आप आपके सोसाइटी के प्लेग्राउंड में हो, then you have to follow these steps and call the elder people. कोई भी elder people हो ना, जैसे आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनको इन्फॉर्म पहले कर दो और फिर डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दो. ओके. इज इट क्लियर? Okay, ma'am. ओके. सो बिकॉज सी ऐसी चीजें जब होती है, these things don't knock the door and come. Yes, Shafiq, today an emergency is going to come in your school. Yes, Shafiq, knock knock, today an emergency is going to come at your house. ऐसे knock करके नहीं आते हैं ना, ખખડાવીને આવે કે આજે ઇમરજન્સી આવવાની છે એ ખબર પડી જાય, No, ma'am. है ना. तो बेसिक It's come directly. हाँ, it comes it's an emergency, right. That is why the word is given emergency. So these steps you should follow whenever you are in a trouble. अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप ये सब कैसे करोगे, है ना. आप रोने लगोगे, डर जाओगे, पर डरना, पैनिक नहीं होना है. You don't have to be panic. Okay, you have to follow some basic steps. Now the second emergency is when an epidemic strikes your village. ओके. कभी भी कोई भी एपिडेमिक स्ट्राइक हो, कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन, या फिर कोई भी एपिडेमिक, कोई भी यू नो समझो फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ हो, या फिर फ्लड आ चुका हो,
है ना, या फिर कोई भी बीमारी ऐसी हुई हो जो स्प्रेड हो रही हो, जैसे अभी हो रहा है, राइट? तो व्हाट विल यू डू इन सच कंडीशंस, दैट वी विल सी. Yes, Shafiq, read the second answer. Okay, ma'am. Ma'am, Hassan can read. Hassan, wait, but I have given the chance to Shafiq. After Shafiq, you read, okay? Okay, ma'am. If an immediate Epidemic. epidemic sticks your village. Stick is Answer. name, strikes. 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 Answer. If an epidemic strikes my village first of all I will inform ne- nearby growing Nearby. nearby growing Government. Government. government hospital or primary health center. Yes, very good. Number two, I will drink boiled Boiled. water. Boiled. Boiled. Boiled water. Number three, follow doctor's a- advice. Advice. Very good. Advice. Number four, cover all the Pits. Pits. filled Pits. pits pits filled with dirty water. Very Number good. five, will not etc. or sleep Excrete. Excrete. excrete or Or s- spit. spit in the open. Number six, I will take the pre- Prevent. preventive preventive Preventing. me- Medicines. medicines regular. Yes, regularly, right? So what things you will do, right? If an epidemic strikes, right? तो हम क्या करेंगे बेटा? First of all, we will inform the. First of all, what we will do? First of all, we will inform nearby hospitals or primary health centers. What will we do, बेटा? हम क्या करेंगे? हम We will नजदीकी. हाँ. Yes. we What will will we do? inform nearby hospital or government hospital or primary health center. Yes. Right. And the second thing we will what do? We'll only drink boiled water. What will we do? We only drink boiled water Yes, why boiled water? Because because boiled ma'am water, when we boil the water, the germs come out and then they die. The yes, bacteria, die. yes, yes. So follow doctor's advice. Whatever doctor has said, we will follow that advice, and we will do whatever doctor has said. Only that, right? Cover all the pits filled with dirty water. मतलब what? Pits मतलब what? खड्डा. जिस खड्डे में गंदा पानी हो, है ना? That pits, what we will do? We will cover that dirty pits. Okay? What will we do? We cover the dirty water Cover all pits. the pits filled with dirty water. What will we do? Means ma'am the when the खड्डा जब वो खड्डा होता Pit, है pit बोलते हैं. उस But pits, पिच pits. पिच ma'am, whenever the pitch is there, so in that हाँ. we uh, put the dirty water or उसको उस pitch को No, no, we no, no. Whenever there is, cover. whenever there is, yes, कवर करना है, मतलब कि उसमें ज्यादा पानी डालना नहीं है. मतलब कि उसमें सूखी मिट्टी डाल के उसको कवर कर देना है, डर्टी वाटर का जो खड्डा बन जाए ना. बिकॉज उसमें मस्कीटो ब्रीडिंग्स और ये सब होता है ना, Yes ma'am, okay. है ना? तो उसको कवर कर देना है. कवर ऑल द पिट्स विद डर्टी वाटर. जो डर्टी वाटर के पिट्स हो उसको कवर कर देना है ना? अंडरस्टूड? Okay ma'am, understood. हु इज व्हाट इज योर नेम बेटा? Ma'am, Hassan. Okay. Then will not excrete or spit in the open. Excrete matlab what? Okay, we should not go for nature's call
in open. Nature schools means what? Okay, toilet and all this will not do in open. Okay, and will not Yeah. spit in the open. मतलब के जो हम spit करते हैं, जो हमारे मुंह से जो भी गंदी चीजें हमें निकालनी है, जैसे थूकना कहते हैं गुजराती में, है ना? तो विल नॉट स्पीट इन द ओपन. जैसे आपको पता है राइट नाउ गवर्नमेंट हैज आल्सो फाइन के केप्ट अ फाइन कि इफ यू स्पीट इन द ओपन यू विल हैव टू पे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, है ना? कि आपको फाइन भरना पड़ेगा. पता है कि नहीं किसी को? है? Yes, Yes, ma'am. Anyone? ma'am. है? Yes, ma'am. किसी को पता है? Yes, ma'am. है ना? So we should not excrete or not excrete speak or not speak. in the open. Okay. फिर लास्ट में क्या है? I will take the preventive medicines regularly. Whatever medicines doctor has prescribed for the prevention. Prevention means protection. That I will take regularly. Understood? Okay, ma'am. Understood. Full answer. Understood, beta? Yes, Yes, ma'am. chalo. Understood. Yes, Hassan. Read the Yes, ma'am. Ma'am, yes, question 2 Hassan. or Read the answer question and 3? explain the points. Question 2 or question 3? No, question two only. Okay, ma'am. Question number 2. If an epidemic strikes your village, answer. If an epidemic strikes my village, uh, first point. First of all, I will inform nearby government hospital or primary health center. Means, ma'am, there is asked that what you will do when in your village the strike is happen, in epidemic strikes is happen. So the in answer tell that first point. First of all, I will inform nearby government hospital or primary health center. Means, ma'am, first point is that first of all I do nothing. First of all, so I first call or inform the nearby, means near, थोड़ा नजदीक हो, नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर. मीन्स मैम नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो तो उसमें इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो उसमें Hmm. इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं. Yes. Second point, Yes. I will drink boiled water. So, ma'am, in second point, there is written that I will drink boiled water only. Boil water only. Hmm. Hmm. Uh, Boiled water. Yes. So, some confused. Why boil water only? So, ma'am, in whenever we boil the water, the germs The die. germs are killed. Die. Yes, Yes, the virus. die. Yes, see, boiled water, dirty water also causes many diseases. Okay, we have seen water pollution. Remember water pollution, the previous Yes. lesson, है ना? So and not only during the epidemic condition, but always अगर आप boiled water पीते हो, then it's very good for your health also. Okay. Yes. So we whenever we boil the water, so it is good for our health. So here is written that I will drink boiled water in a such a condition that we go to hospital, and otherwise also we drink boiled water only. Hmm. Third point, follow doctor's advice. That ma'am, we follow the doctor's advice. Means Hmm. doctor give some medicines, so Hmm. someone do that. Doctor do the medicine, we not eat. We Only not take. Yes. we Hmm. not take it time to time. Hmm. We take this medicine at We are night only. irregular, है ना? Yes, We are irregular. Hmm. yes, it irregular. So his Hmm. health is fully जब what पूरा बिगड़ say? जाए तब हम लेने स्टार्ट करते हैं ना? हाँ, yes, fully बगड़ जाए
तब स्टार्ट करते हैं। तो मैम दैट इज नॉट यूजफुल। तो Yes. जब जैसे हमारी फॉर तबीयत एग्जाम्पल, बिगड़ जाए। right now coronavirus is there, right? So doctors they don't say, but we ourselves, if we drink health drinks, उकाड़ो ये सब चीजें, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना? So if our immunity is increased, right, the coronavirus can stay away from us, right? Instead, we don't. We like to drink thumbs up and Coca-Cola. We don't like to drink ukara, right? So this is very bad for Yes, our health, right? yes. Sometimes we put the Coca-Cola and thumbs up side, and we follow the doctor's advice that drink ukada and that all things. Yes, very good. Fourth point. Fourth point. I hope Hassan is Cover. going to demand today. Hassan is going to demand his father today for mother today for ukara, right? No, ma'am. Why, Hassan? When ukada Ahad, is so. Ahad. Ma'am, I drink one time, but I full नींबू I मैंने फुल नींबू निचोड़ दिया था, इसलिए मुझे टेस्ट नहीं आया था। But lemon is also very good for your health, huh? If you drink with lemon, vitamin C, full vitamin C. हाँ मैम, Yes. हसन हाँ मुझको गावा अच्छा लगता है, गावा होता है ना। નહીં ઉકાળા પીવાના છે બધાય મમ્મીને કહેવાનું છે ઉકાળો બનાવી દો Okay, ma'am. हाँ मैंने वो एक दिन पिया था, मुझको उल्टी हुई थी, उल्टी जैसा होने लगा था। तो फिर डॉक्टर्स के इंजेक्शन खाना और क्या डॉक्टर्स एडवाइस नहीं माननी है मैंने फिर पीना पड़ा, छोटा था तो तो फिर मम्मी ने है ना पिराने पिराने पिया था, पिराया। ओके चलो चलो अच्छी बात है अब रोज पीना ओके देन कवर ऑल द पिट्स है ना filled with dirty Yes, water ma'am. में Yes, yes ma'am. what will Fourth point. Cover all the pits filled with dirty water. Means whenever the water rain is come, so rainwater is good. But when it comes in land, so it is dirty because there is sand and all the things. So the because many water days mix. hmm, Yes, because you tell them because hmm. Then we'll yes, cover those dirty water pits okay yes. So when we like that we cover the we खोदे मीन्स हम खोदे गड्ढा उसमें वाटर जो बारिश okay का वाटर होता है वो okay हम चलो everyone understood now next point understand okay ma'am fifth point will not ma'am what is written will not spit excrete or spit in the open excrete or spit in the open means we not go outside and do for nature's toilet or nature's washroom. हाँ Yes, हाँ nature's nature's toilet or call washroom in outside in nature. we will use our washrooms yes Yes, we use our washroom and not a spit means not हमको थूकना नहीं चाहिए रास्ते पे very good yes रोड hmm. रोड very so good sixth point I will take the preventive medicines regularly means yes now the point is that doctor gives the medicines. So you tell that we will also, whenever the doctor gives us some medicines, so we take it regularly, not yes preventive irregular, yes not uh, irregular. very good Hassan so all these steps you should follow daily basis है ना because anytime any such things can occur right then the third is if there is a theft very good Hassan now the third is that if there is a theft at your neighbor's house अगर आपके नेबर के हाउस में चोर आए हैं तो आप क्या करोगे हाँ तो आप क्या करोगे व्हाट विल यू डू Ma'am, हाँ first we call nearest police station यस or नियरेस्ट police. यस एट दैट टाइम बाहुबली नहीं बनना है कि वहां जाके हल्ला नहीं मचाना है ना वहां आपको सबसे पहले शांति से क्या करना है पुलिस को इन्फॉर्म करना है राइट ओके
पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को हेल्प करना है, जो भी आपने देखा है वो सच्ची इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट? Understood? Yes. Then Yes, ma'am. will cooperate in the police proceedings, will search for the thieves, or will all these informations you will give to the police whatever you have seen. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा आप आपके नेबर को भी सपोर्ट करोगे, है ना, नेबर को मोरल सपोर्ट करोगे, ओके, कि भाई चलो આવું થયું છે તો ડોન્ટ વરી, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू माय थिंग्स एंड एवरीथिंग वे यू हैव टू हेल्प हिम, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम कि डोंट वरी, आपकी जो भी चीजें चोरी हुई है दैट यू विल गेट, पुलिस विल हेल्प यू इन सर्चिंग ऑल दोस थिंग्स। इस तरह से आप बहुत सारे तरीकों से पुलिस को हेल्प आउट कर सकते हो, राइट? So these are the basic steps which you have to follow when there is a theft in your neighborhood. Understood, all of you? Yes, ma'am. Understood. Yes, ma'am. So it is a very informative and understanding lesson, right? Yes, ma'am. Now in the next class, I'll share